and manufacturing of electrical vehicles. Mr. Mundra holds post-graduation diploma in business administration and chartered financial analyst from Institute of Chartered Analyst of India, Hyderabad. Mr. Mundra is the past president of Leo Multiple 323 and has awarded as International Leo of Year in the year 2006 to 7. Mr. Mundra is also a member of Indore Management Association and he is a heartfulness practitioner since last 12 years and trainer since last 4 years. It's our pleasure to have you with us today, sir. I again welcome you and invite you for the session. I request please unmute yourself and yes, invite you for the session. Over to you, sir. Thank you, Ruchi Madam, respected Rajiv sir, and dear students. Well, in fact, I am also a student of spirituality, you can say, a student of meditation. I am practicing heartfulness meditations now more than 12 years, but still I am a student, learning new things every day. So today we are going to talk about why meditation, the heartfulness way. I believe my voice is clear, isn't it? Thank you. Okay, so we are going to talk about why meditation, the heartfulness way. And we will also experience personally, हम अनुभव करके देखेंगे कि हम meditation के बारे में जो बात कर रहे हैं वो experience के रूप में कैसे आती है, how it comes in our experience. So today's session will be roughly between 45 to 60 minutes. Around 25 to 30 minutes we will talk, then we will experience meditation for 20-25 minutes. And after that, if any of you have some questions, some thoughts, some view which you want to exchange, I will try my best to answer. And if I don't know the answer, I will try to come back to you on this. Okay, so we have to talk on why meditation. Well, before we talk on why meditation, we need to understand what is meditation. ध्यान क्यों, उससे पहले जानना जरूरी है आखिर ध्यान है क्या चीज. Now, according to me, the meditation is continuous thinking about any subject is meditation. किसी भी चीज के बारे में लगातार सोचना ध्यान है. हम में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को लेकर. हम ऐसा मानते हैं, हमने जीवन में कई बार ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये फीडबैक होता है, यार जब मैं ध्यान करने बैठा तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया. नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कंसंट्रेशन may be one of the outcome of the meditation, but it's not the only outcome of the meditation. So once again, what is meditation? Continuous thinking about any topic is meditation. Now, if just try to imagine and try to imaginary draw a two axis, x and y axis, and on one axis put an effort. Extreme side is effortlessness, and the other side may be the effortfulness. And on the y axis, try to imagine focus, extreme focus, and less of focus. If we draw this imaginary two axes, we will find that meditation lies somewhere where there is a focus, but it is an effortless focus. So a state of effortless focus is meditation. Going with the same logic, what is concentration? Where you have an effort and focus, that is concentration. So these are two fundamental differences between meditation and concentration. Now the question comes, why we are talking about meditation now? Personally, I feel a lot of similarities between two words, meditation and medication. Now, why you require any medication? You know, remaining healthy, being healthy, हमको स्वस्थ रहना, ये बड़ा एक natural सी चीज है. It is very natural to all of us to remain healthy. But because of any XYZ reasons, if we are not comfortable, we go to doctor and take a medication. Similarly, meditation is very natural to us. इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. But probably because of n number of reasons,
we have lost that natural state. So because we have lost that natural state, we need to learn or relearn the meditation process. And in this time where there's a pandemic, we are facing an unprecedented situation regarding many things: safety, security, health, future, and number of things. It is the high time that we relearn this skill of meditation. Let's take a break from the meditation per se. Let's talk about something very recent. Um, so not very recent, but if you look about the development of science and technology, especially after industrial revolution, and more specifically after Second World War, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें और टेक्नोलॉजी और साइंस जिस तरीके से डेवलप हुई है, दिस इज रिमार्केबल. वी हैव एन हबल टेलीस्कोप जिसको हम यूज करके हमारे कॉस्मोस के जो एज पे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, हम आज उनको देख सकते हैं. We can look into the interplanetary space. Similarly, we at the CERN we have LHC. Using that, we can see the microscopic, not even microscopic. We can dissect the atom and look at the minimalistic part of that atom also. Look at the vaccine. Earlier, it used to take 8 to 10 years for any vaccine to come out. But for COVID, we had a vaccine in 1 year. And now with this mRNA technology, and the scientists are saying we don't need virus again, just give us a code and we design any vaccine. So even if the coronavirus mutant, we can design the vaccine in no time. Phenomenal progress what we have done in science and technology in last couple of decades, and especially after Second World War. How was it possible? ये क्यों हुआ? किस चीज के कारण से हुआ? And I believe you all will agree it's because of human brain. Human brain के कारण से ये सब हुआ. In a body we have 78 organs, but human brain has done phenomenal job. We can confidently say that human brain is the crown jewel of our evolution. ये पूरा जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है उसके लिए उसमें ये ताज है, सर का ताज है, सर का ताज है. Okay, so we have done phenomenal work. At the same time, if you look at some other statistics, a survey being conducted around 2 years back, and which has found that around 40% of employees in corporate India are suffering from stress or anxiety. And many of those people are suffering from depression. अब डिप्रेशन की तो कहानी बड़ी अलग है. हिंदुस्तान में तो अभी सोशली उसको डिजीज के रूप में रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है. आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी दिन का उठा के देख लीजिए, you will find n number of news about road rage, violence, domestic violence, things related with depression. Very recently, the famous tennis player Naomi Osaka has withdrew from French Open because of depression, because of lack of mental health. Very talked about subject in very recent time. One question should naturally come to all of us. When on the science and technology front, we have done so much. Still, what an irony that as a race, as a humanity, we have not seen such a troubled time ever in history. We are suffering so much. Why is it so? Why there are two opposite sides existing together? One, you have developed so much in science and technology, but if we talk about our well-being, probably we are at the lowest point in human history. We are suffering so much. ये क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में ना बड़ा स्वाभाविक है. अगर हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि why is it happening, why is it so? So according to me, I believe the source of development is also our source of suffering. जो हमारे डेवलपमेंट का स्रोत है, शायद से वही हमारी सफरिंग का भी स्रोत है. और वो क्या है? Which is that source? Our brain. Brain, which is a great tool, but also the reason of our suffering. Let's understand a little deep about the brain.
In brain there is a gland called amygdala. एक हमारे दिमाग में, हमारे सिर में एक ग्रंथि होती है जिसका amygdala नाम है. And this amygdala has been developed in last 1 million years. And we share this amygdala gland with all other mammals. Amygdala gland का काम क्या होता है? This is responsible for our fear sensation. Now one can argue कि fear अच्छा है या बुरा है, ये जो कुछ भी हो, लेकिन fear जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए. अगर किसी जानवर पे कोई फिजिकली उसको ऐसा लगता है कि मुश्किल का समय है, so this amygdala gland comes into the action and help an animal to decide whether to fight in that situation or to flight from this situation. जो स्थिति सामने है उसका सामना करना है या वहां से भाग जाना है. मानव के साथ में भी, ह्यूमंस के साथ में भी सेम ऐसा ही होता है. एमिगडाला ये हमारी मदद करती है इन चीजों में, किसी भी संकट के समय, कि हम वहां से भाग जाएं या उसका सामना करें. पर ह्यूमंस में एमिगडाला एक नए रूप में और बढ़ गई है. इट्स नॉट ओनली अबाउट अवर फिजिकल डेंजर, but amygdala also work when our thoughts and our beliefs are in danger. Let's take an example. Suppose you are sitting in a meeting or you are sitting in a classroom and you have done something mischief or some XYZ, and the teacher in the classroom looks with a full eyes towards you. आपके दिमाग में क्या होता है? Again, a sense of fear comes in, and then you decide how to respond to that fear, how to respond in that situation. So amygdala comes in picture, helps you to decide your response. Probably we are the only species which has this ability to go into the past, and depending on the past, we can project the future, and amygdala helps in. But what the amygdala does, amygdala continuously force us to move between past and future. हमारी कंडीशन उसे एक पेंडुलम के जैसी हो गई है कि हमारी थिंकिंग, हमारी बिलीफ के कारण से, हमारी थिंकिंग और हमारे बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ सर्टेन पास्ट. हम उस पास्ट को यूज करके वी ट्राई टू फोरकास्ट द फ्यूचर, एंड इट इज हैपनिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. अब इसके कारण से क्या हुआ? जो हमारी इनेट कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी टू रिमेन इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीने की, वो हमने कॉम्प्रोमाइज कर दी. अगर हम आज दिन भर में हमारे साथ क्या हुआ अगर एक बार सोचे, तो हम पाएंगे कि अधिकतर समय, प्रॉब्ली मोर देन 90%, वी वर आइदर इन अवर पास्ट, हम हमारे भूतकाल को एनालिसिस करने में थे, और फिर अगर हमने भूतकाल को एनालिसिस किया तो भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम कभी भी प्रेजेंट में बहुत कम समय रहे हैं. Why? This is an irresponsible behavior of our brain. So we need to learn how to regulate the brain, how to remain in present. We discussed earlier that brain is a very powerful tool. ये बिल्कुल वैसी बात हुई कि मेरे हाथ में एक बहुत शार्प चाकू है, and that sharp knife can dissect anything, but the hand which is carrying that knife is not in my control, and I started hitting myself. और मैं blame कर रहा हूँ चाकू को कि that knife is hurting me. No, knife is just a tool. Probably because my hand is not in my control, it starts hurting me. The same is the case with our brain. A brain which is very powerful tool available to us, but we have lost the capacity to regulate it. And if you look at our education system, probably since our childhood, we've been fed with lot of information. हमको बहुत सारी information तो जरूर सिखाई गई है, बताई गई है, पर फॉर्मल एजुकेशन में शायद से कहीं ना कहीं हम ये चीज मिस कर गए हैं कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है उसको आपको कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे आपको कंट्रोल करना है, सो यू कैन डू मच प्रोडक्टिव वर्क. सो इन अ सेंस मेडिटेशन इज नथिंग. मेडिटेशन इज समथिंग बाय विच वी कैन रेगुलेट अवर माइंड, कि वो हमारी इच्छा से
जब हमें जरूरत हो तब वो पास्ट में जा सके, जब हमारी जरूरत हो तब वो फ्यूचर में जाके प्रोजेक्ट कर सके, और जब हमारी विल हो, जब हमारी इच्छा हो, तब वो प्रेजेंट में रह सके. Getting this capacity is nothing but a meditation. Now, one argument should come that this problem we talked about, that this problem of anxiety, stress, depression, yeah, this ability or this thing of going past and future has increased probably in last 50 years, 100 years, 2 years. पर अगर हम ध्यान की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो हमारे इंडियन माइथोलॉजी में, इंडियन हिस्ट्री में मेडिटेशन तो हजारों साल से है. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टांसेस, इंसिडेंट्स, लॉट ऑफ स्टोरीज आर अवेलेबल दैट सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडियंस, एंशिएंट इंडिया वर डूइंग मेडिटेशन. देन व्हाई मींस, अभी तक हमने जो बात की वो एक बात की क्राइसिस मैनेजमेंट की, दैट यस वी आर इन ए क्राइसिस सिचुएशन वेयर आवर माइंड is not regulated and we need to learn. But in older times, when the crisis was not there, still people were practicing meditation. What it means that there must be some other purpose, some higher purpose of meditation. And through meditation, we can achieve that higher purpose. वो higher purpose क्या है? उस higher purpose को ढूंढने के लिए हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा. What is the goal of human life? हमारे मानव जीवन का या हमारे जीवन का क्या गोल है? अच्छा, गोल कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है. मैं छोटा था तो इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर थे. थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, तो मैं फिनेंस में कुछ करना चाहता था. फिनेंस में किया, कुछ समय बाद में बिजनेस में आया तो लगा कि मुझे लॉ प्रोफेशन में जाना चाहिए था, बिकॉज आई हैड ए वेरी नेचुरल नेक टुवर्ड्स लॉ. और उसके बाद कुछ और लगा, कुछ और लगा. हालांकि इस टाइम स्केल पे बहुत छोटे गोल थे, पर गोल कोई एक स्टैटिक चीज नहीं है. गोल जनरली एक डायनामिक नेचर का रहता है. द मोर यू इवॉल्व, द मोर अंडरस्टैंडिंग यू डेवलप the higher and higher goal, just like in Maslow theory of hierarchy. But generally, there is a consensus amongst the thinkers of the world that the goal of human life is to evolve. हमारे ह्यूमन लाइफ का जो गोल है, हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो है इवॉल्व होना. जैसे आप कॉलेज में आए तो आपका एक गोल था कि चलिए हमें ये एग्जाम पास करनी है, हमें एक अच्छा करियर बनाना है, हमें एक अच्छा बिजनेस या एक अच्छा जॉब लेना है, ये आपका गोल था. ऐसा का वैसे ही मानव जीवन का एक गोल है, टू इवॉल्व. But when you talk about evolve, what exactly it means, what actually it means by word evolve? Evolve किसको होना है? हम किसके evolve होने की बात कर रहे हैं? हमारी बात कर रहे हैं तो हम कौन है? Who are we? So again, the Indian spiritual science have bifurcated our existence, in mainly three categories. Physical body, that is we call it the sthul sharir. Subtle body, which is Sukshma Sharir. And the third one is causal body. We can call it as a Karan Sharir. The name itself says the reason for our existence. So causal body is basically our soul. Can soul be evolved? Well, it's been considered that soul is Ajar, Amar, is pure. It can be evolved, but you cannot do much about it. It's evolved very indirectly. The very first body, that is the physical body, our sthul sharir, can it be evolved? Yes, of course it can be evolved. I can have a very healthy body. I can have my body as strong as iron. हाँ? लोहे जैसा शरीर में कर सकता हूँ. But if I want to evolve and want to have capacity to fly like an eagle or swim like a dolphin, can I have it? Yeah, I can have it, but I require 1 million years to develop those capacity. So physical body or the evolve of physical body has a very limited scope. Then what remains? The subtle body, the Sukshma Sharir. And it's been believed that this Sukshma Sharir, this subtle body,
is the playground of spirituality and the playground of meditation. Now, what is this subtle body? What is this Sukshma Sharir? आखिर ये है क्या चीज? So subtle body, again, Indian spiritual science bifurcates the subtle body in 19 sub-bodies, but we will talk only about the four bodies which are important. Uh, these four bodies are like consciousness, in Hindi what we call as the chit. The second subtle body is mind, manas. The third subtle body is intellect, buddhi. And the fourth subtle body is our ego, hamara aham. So when we talk about evolving our subtle body, we basically mean that our these four things, consciousness, mind, intellect, and ego, should evolve. Our chit, manas, buddhi, and ahankar evolve hone chahiye. Now, consciousness being one of the most important thing, but the situation here is consciousness कब भी इवॉल्व हो पाएगी जब बाकी की तीन सटल बॉडी इवॉल्व हो पाएगी. दिस वर्ड कॉन्शियसनेस और चित हमने कई बार सुना है, बहुत बार सुना है, बट व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय कॉन्शियसनेस? ये चित्त से हमारा कहने का मतलब क्या है? We talk about subconsciousness or super consciousness or the consciousness, but what exactly we mean by consciousness? According to me, the consciousness is nothing but the degree of awareness. The degree of awareness about everything, whatever we're talking about. सिंपल सी बात है, आज इंदौर में क्या हो रहा है, what is my degree of awareness on that? Just extrapolate to it any level. And if we have that capability to understand this, or we are aware about those things, it means our consciousness is expanded. Swami Vivekananda once very nicely said that it is the duty of every human to use the available spectrum of consciousness to soar high in the sky of superconsciousness and dive deep in the ocean of subconsciousness. ठीक है, दो विशाल समुद्र है, एक कह ले कि एक समुद्र है और एक विशाल आकाश है. हमको जो हमारे चित्त की, हमारी कॉन्शियसनेस का जो स्पेक्ट्रम हमारे पास में है, हम उसको कैसे यूज करके भी हम उस सुपर कॉन्शियसनेस के विशाल आकाश में जा पाए, और सेम टाइम में हमारे सब कॉन्शियस जो एक विशाल महासागर की तरह है उसमें हम डुबकी लगा पाए. So this is the objective of meditation. That yes, if we practice meditation regularly in a disciplined way, yes, we will be able to expand our consciousness. So I believe I have talked sufficiently about meditation, its purpose, and why meditation. The process of meditation, what we follow, or what I follow and I know a little bit about, is the heartfulness meditation. And as the name itself says, the heart plays a very important part in this type of meditation. So what is a heartfulness meditation? Now, heartfulness meditation has three unique things. One is the meditation aided by transmission. Second is cleaning. And the third is the prayer. The very first thing we talk about is the meditation with transmission. Now, what exactly we mean by transmission? What is transmission? Let's take an example of a kid who is going to school for the very first time. एक बच्चा है जो पहली बार स्कूल जा रहा है और स्कूल में कोई टीचर नहीं है. वो नर्सरी या KG1 में गया. अगर वहां पे टीचर नहीं है तो क्या वो बच्चा अपने आप से कुछ सीख पाएगा? हाँ, सीख पाएगा, पर जो चीज सीखने में उसको 1 साल लगे, शायद से वो चीज सीखने में उसको 5 साल लग जाएगा. Just extrapolated that kids reaches to class 11th and wants to learn about differential calculus. And again, there is no teacher available there. Can he learn? Yes, again, that kid can learn, but it will take around 10 years to learn on its own. That kid reaches an engineering college and he wants to learn about electrical design. Can he learn? Yes, absolutely, he can learn, but he will take 25 years to learn electrical design. The similar thing is with the meditation. We can learn, we can do it on your own. We don't require any help.
but the time required will increase substantially. And what is the smart way to do the things? That we should learn something in a shortest possible time. So thus transmission comes there and help us. What is transmission? Transmission is a universal energy which expedite our spiritual journey. ये ट्रांसमिशन आशा आता कहाँ से है? हम समझने के लिए कह सकते हैं सोर्स से आता है. Those people who believe in God can say that yes, it comes from the source, God. Whatever the name we want to give, we can give it, but it comes from the source. Why? To expedite our journey. And the wonderful thing about transmission is it can be felt. हम कुछ समय बाद कुछ समय के लिए meditation करेंगे. If the God willing, probably all of you can experience what transmission is and how it helps our spiritual journey. The second thing about heartfulness meditation is cleaning. What is cleaning? What we are talking about? Why we are talking about cleaning? Let's take an example. For most of us, milk may be healthy for our body. दूध हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा. पर अगर उस दूध को पीने के पहले अगर हम उसे गंदे बर्तन में या गंदे ग्लास में डाल दें तो क्या होगा? हो सकता है जो दूध हमें फायदा देने वाला हो वो फायदे की बजाय हमें कुछ नुकसान पहुंचा दे या फायदा तो नहीं करे. The same is true with us when you are using transmission for our spiritual journey and we are not cleaned ourselves, then probably that transmission may not help. Now, when we talk about cleaning, what are we talking about? हमारे इसमें क्या क्लीन करना है? हम रोज नहाते हैं और हम में से कई लोग दिन में 2 बार नहाते हैं, तो हमें क्या चीज को क्लीन करने की जरूरत है? So what we need to clean is our impressions. या हिंदी में अगर कहें तो छापे, या कई लोग जो वर्ड यूज करते हैं संस्कार. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वी रिएक्ट एंग्रीली और we behave in some XYZ manner and we don't know why. The reason for all those things is nothing but the impressions what we carry and how these impressions been formed, probably because of the life, our experiences, our behavior, our thought process. And those people who believe in previous life, probably we are carrying those impressions from the past life also. But nowadays, even this life is sufficient to build a lot of impression. So very slowly and gradually, those impressions like anger, prejudice, there can be n number of impressions. We need to clean ourselves from those impressions and expedite the journey. And the third part is the prayer. और वो किसी ने खूब कहा है कि जहाँ पर सब कुछ फेल हो जाता है प्रेयर काम करती है, प्रार्थना काम करती है. So yes, heartfulness prayer is something. These are some 4 lines. We pray. And prayer हम सब में से सबने की है कभी ना कभी कहीं ना कहीं. But heartfulness prayer is something different. In this prayer, we do not ask for anything. We do not ask, and we just present the facts in front of the God, the supreme power, the source, or something. और ये प्रेयर एक तरीके से चाबी की जैसा काम करती है. Like in a car, if you are sitting and you move the key, the car start. Similarly, the heartfulness prayer, when you do prayer, the transmission starts. So in a nutshell, this is the 3 important aspects of the heartfulness meditation. The organization, the heartfulness is 75 years old organization, and there are around 1.5 million, करीब 15 लोग हैं वर्ल्ड वाइड 150 देशों में जो रेगुलरली हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं. मुझ जैसे करीब 15,000 ट्रेनर हैं पूरी दुनिया में, और हम सब लोग भी एक तरीके से स्टूडेंट है लर्निंग अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. मैं 2009 से करीब 12 साल से मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ. And I often face this question in this type of webinar or other seminars.
कि आप 12 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या अब आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 12 साल भी बाद भी आज भी जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पर वो मुझे परेशान नहीं करते। आई डोंट फाइट विद दोज थॉट्स। It's very natural for ourselves, our mind, to come up with various thoughts. What we need to learn is to regulate those things and ignore those thoughts. Another question I face, that because you are practicing meditation since long, you do not face any problems like anger, anxiety, and all those things. No, I still face these challenges, and sometimes I face a lot of anxiety. I still face a lot of fear in my life. But the time taken or time required to come out of those challenges, that has reduced considerably. Okay, if there is anxiety, yes, in very short time I come out of it. And I hope one day probably I will be able to do away with those problems. But but it's absolutely fine. It's coming, but I am able to handle it. So meditation is not a magic wand, but yes, it helps you. It makes you something. It gives a capability to come out of these challenges. So very quickly, how to do meditation? हम लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, हमारी जैसी इच्छा होती है। चेयर पे बैठना हो चेयर पे बैठ जाते हैं, पैर फोल्ड करके बैठना हो बिल्कुल वैसे बैठ जाते हैं, जैसे हमको कंफर्टेबल हो वैसे बैठते हैं। धीरे से आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने के बाद में हम एक थॉट लेते हैं, सिर्फ एक थॉट लेते हैं, दैट देयर इज अ डिवाइन लाइट इन माय हार्ट। मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। हम लाइट देखते नहीं हैं। We take a thought that there is a divine light in heart which is attracting me. बस हम ये थॉट लेके बैठ जाते हैं। और जैसा हमने कहा, हमें थॉट लेके बैठे, लेकिन शायद से हजारों विचार हमारे मन में आने लग जाएंगे, हमारे दिमाग में आने लग जाएंगे। हमें क्या करना है उन विचारों के साथ में? कुछ नहीं करना है, उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। हमें सिर्फ उन्हें इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करना है? Like if you have an uninvited guest at your home, what you do? You try to ignore them. The same is with those thoughts. We try to ignore them. अगर हम बहुत ज्यादा उलझ गए उन थॉट्स में, तो सिर्फ हमको अपने आप को याद दिलाना है कि हम मेडिटेशन करने बैठे हैं। हमको मन में बार बार दोहराना नहीं है कि दैट देयर इज अ डिवाइन लाइट इन माय हार्ट। ठीक है? तो हम मेडिटेशन शुरू करेंगे, और मेडिटेशन शुरू करने के पहले 5 मिनट के लिए एक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज कैसी होगी? मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपको। इंस्ट्रक्शन लाइक कि इमेजिन कीजिए कि अर्थ, मदर अर्थ से एक एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर हो रही है, और आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, आपके नीज रिलैक्स्ड हैं। ऐसे हम वेरियस बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। पैर के अंगूठे से लेके सिर के टॉप तक, क्राउन जिसको कहते हैं। और फिर उसी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बाद में इन कंटिन्यूशन हम धीरे से अपना अटेंशन, अपना ध्यान अपने हार्ट की तरफ लाएंगे, और हम एक थॉट लेंगे दैट देयर इज अ डिवाइन लाइट इन हार्ट व्हिच इज अट्रैक्टिंग। और शांति से अगले 15-20 मिनट के लिए बैठेंगे, और अगले 15 से 20 मिनट में मैं दैट्स ऑल बोलूंगा, तब आप बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलिए एंड स्पेंड 1 or 2 minutes to analyze that what has happened in last 20 minutes or so. क्या हुआ, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खराब महसूस कर रहे हैं, बड़ा गुस्सा आ रहा है, फीलिंग पीसफुल, वॉट एवर इट इज, एब्सोल्युटली ओके। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अपना रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, जस्ट फॉलो इट सिंपली। बिल्कुल भी लोड मत लीजिए। अपन वी आर टेकिंग इट वेरी स्लो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, वी आर गोइंग वेरी स्लो। ओके, तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और महसूस कीजिए
कि मदर अर्थ से एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा आपके पैरों के अंगूठों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। This divine energy is moving upwards in your body. आप अपने आप को एक सुझाव दीजिए कि आपकी पैरों की सारी उंगलियां, आपकी एडी और उसके आसपास की सारी मसल्स बिल्कुल आराम से है। They all are very comfortable. Now very gradually move your attention towards your knees. अपने पैरों के घुटनों की तरफ अपना ध्यान ले जाए और अपने आप को सुझाव दीजिए कि आपके पैरों के घुटने और घुटने से नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल आराम से है। All the muscles are completely relaxed. अब धीरे से अपना ध्यान अपनी कमर की तरफ ले जाए और खुद को सुझाव दीजिए कि कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल आराम से है। They all are completely relaxed. अब धीरे से अपना ध्यान अपने पेट की तरफ ले जाइए और महसूस कीजिए आपका पेट और उसके आसपास के सारे ऑर्गन्स पूरी तरीके से आराम में है। They all are completely relaxed. Now gradually take your attention to your chest area and upper back and give a suggestion that your chest area and upper back are completely relaxed. Now very gradually take your attention to your shoulders. अपने कंधों की तरफ अपना ध्यान ले जाए और महसूस कीजिए your complete stress is moving out from your shoulders. आपके कंधे बिल्कुल आराम से हैं। अब धीरे से अपना ध्यान कंधों से हाथों की कोहनियों की तरफ ले जाए और महसूस करें कि आपके हाथ, कोहनियां, कलाइयां, हथेली और उंगली के पोरों तक हर मसल्स, एवरी पार्ट इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। महसूस करें आपके हाथ उंगली के पोरों से लेकर कंधे तक बिल्कुल आराम से। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी गर्दन की तरफ ले जाए, योर वॉइस बॉक्स, एंड फील दैट दे आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब धीरे से अपना ध्यान अपने जबड़े की तरफ ले जाए। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर जॉ, योर चीक्स
आपके गाल की तरफ, होठ, नाक, कान की तरफ, और महसूस कीजिए कि ये सब हिस्से बिल्कुल आराम से हैं। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी आंखों की तरफ ले जाएं और महसूस कीजिए कि आपकी आंख, आंख के अंदर की आई बॉल्स, दे आर सिंपली मेल्टिंग अवे, मानो पिघल रही हो। And every part of your eyes are completely relaxed. अब धीरे से अपना ध्यान अपने फोरहेड की तरफ, अपने ललाट की तरफ ले जाएं और महसूस करें आपका ललाट, आपके आईज के बीच की जगह, आंखों के बीच की जगह, आपका पूरा सर और सिर के अंदर की हर मांसपेशी बिल्कुल आराम से है। Your mind, your brain, everything is completely relaxed. सब कुछ शांत है। अब आपकी पूरी बॉडी, सर के टॉप से लेके पैरों के अंगूठे तक बिल्कुल आराम से है। दे आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब बहुत धीरे से अपना ध्यान अपने हार्ट, अपने हृदय की तरफ ले जाए और खुद को ये सुझाव दें कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है जो आपको आकर्षित कर रहा है। अगले कुछ समय के लिए इस ध्यान में बने रहे।
बस कीजिएगा, दैट्स ऑल। प्लीज स्पेंड अ मिनट और सो टू एनालाइज। ये समझने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए कि पिछले 20 मिनट में आपने कैसा महसूस किया, अब आपको कैसा लग रहा है। So, thank you very much. I hope all of you must have enjoyed this session. अगर आप में से किसी का कुछ ऑब्जर्वेशन हो, कुछ चीज शेयर करना चाहते हो या कुछ पूछना अनुराग चाहते हो। अनुराग जी, प्रेयर के बारे में आपने बात किया था वो। जी, तो हार्टफुलनेस में जो प्रेयर है, इट हैज 4 लाइन्स। और ये लाइन किस तरीके से है? हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो कि हमारी उन्नति में बाधक है। ऐसे में तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमको हमारे लक्ष्य तक ले जा सकती है। आप देखिए, इन 4 लाइनों में कहीं पे भी हमने किसी से कुछ मांगा नहीं है। वी जस्ट प्रेजेंटेड द फैक्ट इज इट। हे नाथ, हु इज नाथ? The ultimate power, the supreme, the God, or whatever name we can give. तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। You are the goal of human life. We are yet but slaves of our wishes. हम हमारी इच्छाओं के गुलाम हैं जो कि हमारी उन्नति में बाधक है। हमारी इच्छाएं हमको प्रोग्रेस नहीं करने दे रही। In that case, you are the only source and power. तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमको हमारे लक्ष्य तक ले जा सकती है। We express our inability कि हम में तो ताकत नहीं है, but you are the only power and you are the source जो हमको ले जा सकती है। ये प्रेयर हम कब करते हैं? हम ये प्रेयर एक बार जब सुबह पहली बार मेडिटेशन करते हैं तब एक बार प्रेयर करते हैं, और रात को सोने के पहले हम इस प्रेयर को 3-4 बार हम गौर करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रेयर कहना क्या चाह रही है। लाइक इन इंडियन माइथोलॉजी, हमारे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, वो किसने लिखे हैं? कहीं नहीं पता है किसने लिखे हैं। जरूर लिपिबद्ध वेद व्यास जी ने गणेश जी को बोल के या जिस तरीके से भी किसी ने लिखे हैं, वे लिपिबद्ध हुए हैं, पर वो एक तरीके से श्रुति ज्ञान है। किसी को कहीं ज्ञान आया और उनको संस्कृत आती थी, इसलिए उन्होंने वेद संस्कृत में लिख दिए। ऐसा कैसे इस प्रेयर के साथ में है कि किसी को कुछ वाइब्रेशंस कहीं से आए ऊपर से, और उन्हें हिंदी और इंग्लिश आती थी, इसलिए उन्होंने उस प्रेयर को हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। सो ही हैज रिसीव्ड द डिवाइन वाइब्रेशन एंड कन्वर्टेड इट इनटू द वर्ड्स।
हमारा काम इसके बिल्कुल उल्टा है। हमें उन वर्ड्स को यूज करके उस डिवाइन वाइब्रेशन तक पहुंचना है। So in nutshell, this is the prayer. Probably in some other day when we have another some time, we can further dwell on the meaning of prayer in each word. या क्वेश्चन अनम्यूट कर सकते हैं मनीषा मैडम? यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स. इधर चैट में भी ओपन करें और प्राइवेट मत करें, चैट कर रहे हैं. एक क्वेश्चन है सर, बोले कि आप बिजनेस भी संभालते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता? Oh, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. In fact, the material life and spiritual life are like the two wings of bird. किसी पक्षी के दोनों पंखों के समान है और कोई किसी से ज्यादा नहीं और कोई किसी से कम नहीं. जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख की जरूरत होती है, तो ऐसा ही टू इवॉल्व वी नीड बोथ द विंग्स, द स्पिरिचुअल विंग एंड द मटेरियल विंग. तो नहीं, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है. इनफैक्ट मेडिटेशन मदद करता है कि कहीं पे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है तो मेडिटेशन हेल्प्स यू इन डेवलपिंग विवेका, कि आप कैसे चीजों को डिसर्न करके उस समय पे जो जरूरी है डिसीजन लेने के लिए और जो करने के लिए जरूरी है वो आप कर सकें. सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी. प्लीज अनम्यूट मनीषा मैडम. Yes, Pooja, any question? So now students can unmute themselves and ask. अच्छा अच्छा, हाँ अनम्यूट कर सकते हैं आप हैंड रेस करके. हाँ हाँ, या गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग Good. सर. जैसे ओवर थिंकिंग है तो मतलब ऐसा होता है कि मेडिटेशन के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं. हम चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करें, हम कंसंट्रेट करें एक ही थॉट के ऊपर, पर आंखें बंद कर ले फिर भी वो थॉट जो है वो हम एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते. कंटिन्यूअसली बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं. अभी जैसे आपने करवाया, बी ऑनेस्ट, मैं तो एक पल के लिए सो गई थी. तो आप सो ही नहीं थे, पहली बात तो ये. मेडिटेशन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम सो गए. ठीक है, हम सोए या डीप मेडिटेशन हुआ, इसको कैसे अंतर करें कि जब उस स्थिति से, उस सिचुएशन से जब बाहर हम आ रहे हैं उसके बाद हम कैसा महसूस कर रहे हैं. अगर हम ड्राउजी महसूस कर रहे हैं मतलब हम सो गए थे, लेकिन हम फ्रेश और रिजुनेटेड महसूस कर रहे हैं मतलब हम डीप मेडिटेशन में थे. जहां तक थॉट्स की बात है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि आज 12 साल मेडिटेशन करने के बाद मुझे अभी भी थॉट्स आते हैं. कोई बात नहीं, उनका काम है आना, मुझे वो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देते. आई जस्ट ट्राई टू इग्नोर देम. मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ता हूँ. थॉट्स की अपने आप में कोई पावर नहीं होती है. द अटेंशन व्हाट वी गिव टू दोज थॉट्स, दे गेट पावर फ्रॉम आवर अटेंशन. तो यही हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम एफर्टलेसली कैसे फोकस करें और मेडिटेशन करें. तो आफ्टर ड्यू प्रैक्टिस पहली स्थिति आएगी कि थॉट्स आ रहे हैं लेकिन परेशान नहीं कर रहे हैं, और शायद से कुछ समय बाद थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. यू फील वेरी कंटेंट. वो थॉट्स आपको ट्रबल नहीं करेंगे. यस यस, यू हैव रेज द हैंड. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन था कि एक दिन में कितनी देर तक मेडिटेशन कर सकते हैं? वेरी गुड. जितनी इच्छा हो आपकी उतनी देर कर सकते हैं, पर एक बार में 1 घंटे से ज्यादा नहीं. ओके. So it happens that okay, suppose you are flying somewhere, you are traveling somewhere, और आपके पास में 8-10 घंटे हैं, या लॉकडाउन का टाइम में कुछ भी काम करने को नहीं है, नेटफ्लिक्स देखते देखते आप बोर हो गए, परेशान हो गए, तो आज मेरे पास बहुत टाइम है, कुछ भी करने को नहीं है. डू मेडिटेशन, पर 1 घंटे बाद उठ जाइए, टेक ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, टेक ए वॉक, और फिर वापस से मेडिटेशन कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.
Thank you. यस अमित जोशी जी. हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, Amit. हाँ, नहीं सर, बड़ा अच्छा आपने बताया ध्यान का, और मैं भी इनफैक्ट फर्स्ट हो ही गया था उसमें जब आपने इतनी देर करवाया. तो पहली बार लाइफ में मेडिटेशन किया है मैंने. इट वाज वेरी बड़ा अच्छा लगा कि वो. बट सर मैंने कई बार देखा है कुछ लोगों को मेडिटेशन करते हुए कि कुछ मेरे परिचित थे, बचपन में उनका जाया करता था, तो वो लोग घंटों घंटे उसमें खो जाया करते थे. मतलब कुछ नॉट तो टाइम लिमिट कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब क्या कर रहे हो, तो मेडिटेशन ही कर रहे हैं. तो ये अवस्था कैसे वो लोग प्राप्त कर लेते हैं सर इतने जबरदस्त तरीके से? नहीं, मुझे नहीं पता है वो कैसी अवस्था आती है, और मेरे हिसाब से वैसी अवस्था के बारे में मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ. जैसा मैंने पहले बताया कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन तो एक बार में 1 घंटा ही करना चाहिए. It's enough एक बार में 1 घंटा हाँ करना. हाँ, 1 घंटा वो बहुत. 1 आवर इज मोर देन एनफ सर. हम लोग की लाइफ में 1 घंटा निकालना मेडिटेशन के लिए, तो फोकस होकर निकालना बड़ा मुश्किल है. तो कोई बात नहीं, टू स्टार्ट विथ आपके पास जितना समय हो, 5 मिनट है तो 5 मिनट, 10 मिनट है तो 10 मिनट, 1 घंटा है तो 1 घंटा, जितना समय है आप मेडिटेशन कीजिए. और कभी किसी दिन ऐसी स्थिति है कि आज तो मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए 5 मिनट भी नहीं है, उस दिन तो आप जरूर मेडिटेशन कीजिए. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. तो मेरे ख्याल से हो गया. क्वेश्चंस नहीं, सब अनुभव में ही है लगता है. बहुत अच्छा रहा अनुभव. Thank you. तो once again, अनुराग जी, many thanks to you for getting this time and sparing this time and for meditation with our students as well. Thank you sir, pleasure is mine. बहुत बहुत धन्यवाद. तो यही एंड करते हैं हम आज का सेशन, यही एंड करते हैं. Just before end, yes sir. सॉरी, अगर आप में से किसी को और इंटरेस्ट है मेडिटेशन को आगे परस्यू करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द वेबसाइट. हार्टफुलनेस की वेबसाइट है, आप गूगल कीजिए, हार्टफुलनेस की वेबसाइट आपको मिलेगी. एंड इट गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत सारे ट्रेनर्स, मेरे जैसे ट्रेनर से आप कनेक्ट हो सकते हैं. और एक प्रोसेस होती है कि शुरू के 3 दिन आप किसी ट्रेनर के साथ में मेडिटेट करें. फिजिकली तो अभी संभव नहीं हो पा रहा है, पर रिमोटली जैसे हम जूम के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू हम मेडिटेट कर सकते हैं. सो डू विजिट द हार्टफुलनेस वेबसाइट. थैंक यू sir, thank you. So yes, we will meet tomorrow again at 6 p.m. Thank you Dr. Anurag sir. Thank you sir, thank you very much. Okay. Thank you sir, thank you so much. Very good. Bye.